Hello kids, welcome back to your computer classes. So kids, here I am with you to explain you how you can personalize your Windows 7 screen. Now how you can personalize your Windows 7 screen. So kids, after reading the previous chapter, that is Windows 7, we are here to read about how we can personalize Windows 7. So how we can personalize it? And what are the different topics that we have to cover in this chapter? Let us start. So in this chapter we have to read about opening personalization window, changing desktop background, setting the screensaver, changing the color scheme, applying theme, adding and removing a gadget on the desktop. So these are the things that we have to read. Now some of them we have already completed, but today I'll give you some few recall कि हम कैसे करते थे. तो let us start. Now first is opening the personalization window. Okay. चलो. So first of all we have to click on the start button. Then we have to click on the control panel. Then we have to click on the control panel. Now the control panel window will appear. Control panel window will appear. Third is click on appearance and personalization. Now the appearance and personalization window appears. Now click on personalization. The personalization windows appear. Click on the close button when you have finished working. So first of all we have to click on the start button, then we will go on control panel, and after going on control panels we will open appearance and personalization, where we will click on personalization, and after clicking on personalization we will click on close button. Once we are done we will click on the close button once we are done with the editing. Okay, now fine. Now the next thing is update your knowledge. So let us see. Now see how we can update our knowledge, what is written here. So you can open the personalization window by right clicking on an empty place on the desktop and then click on the personalize from the menu that appears. So this too I have already explained you yesterday also. Now let us do it once again. So this is the blank space. And yeah. तो देखो यहाँ पे मैम ने क्लिक किया तो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. यहाँ पे जब मैम ने क्लिक किया तो कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं. व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, मैनेज वन ड्राइव बैकअप, व्यू सिंक प्रॉब्लम, ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस, फ्री अप स्पेस, है ना. देन न्यू, देन डिस्प्ले, सी, न्यू डिस्प्ले सेटिंग एंड देन पर्सनलाइज. ठीक है. So once we will click on personalize, see this button, this whole page will appear from where we can change the things. Okay, now so now today I am going to explain you how we can today I am going to explain you how we can change our background. So now this to we have done yesterday also, but today we will do some net activity. Net activity means now today I will download some picture from the internet. Now after downloading those pictures from the internet,
I'll be able to keep that as my background. Now let us move toward our book. So we have done this yesterday. Now changing desktop background. So without reading, let us do how we can change our background. So what are the steps? First step is that we will go on start button, then on search, and there we will type control panel, and we will open the control panel. Okay, so this is control panel. Now from here I will click on appearance and personalization. So I will click on personalization, then taskbar and navigation. Now see, I have clicked on background, and now see background में I can click on any image. ठीक है, I can click on any image too. Suppose now this time I want this image to set as my background, desktop background. So I will click on this image. ठीक है, I have clicked this image. Now see, if I minimize my, wait, let me show you again. I'll click on this umbrella. ठीक है, अब मैंने मैम ने क्या किया, अम्ब्रेला पे क्लिक कर दिया. नाउ सी, जब मैम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरी स्क्रीन पे देखो क्या कौन सा बैकग्राउंड बना हुआ है, अम्ब्रेला वाला बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पे बना हुआ है ना. ओके ग्रेट. Now next thing is, the next thing that we are going to do, so this is how we can change the background, desktop background. Now the next thing that I am going to teach you is how you can download a picture from internet and you can keep that picture as your desktop background. Okay, so I am going to explain you how you can do that. So first of all, I have to connect my laptop with the internet. So I have connected it with the Wi-Fi. Then I will click on the Google Chrome. Okay. After clicking on the Google Chrome, I will add a new tab, and in this new tab, I will type desktop wallpaper or background. Chalo, desktop wallpaper. So see how beautiful backgrounds are here. So let us see some more images. तो अब हम कहाँ गए, हम more images में गए. चलो देखते हैं कुछ अच्छी इमेज जिसको हम डाउनलोड करके अपना डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड बना सकते हैं. मुझे कौन सी इमेज बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये वाली भी इमेज बहुत अच्छी लग रही है, देन मुझे ये वाली इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. लेट अस सी सम मोर. Okay, so there are so many beautiful images that it is very difficult for me to decide any one image. So I'll go with this one. No, this one. So now what I'll do, I will save image. Now I will save this image as wallpaper. Okay. Now I'm going to save it. तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये इमेज सेव हो गई. नाउ अब हम कहाँ जाएंगे, वापस से हम जाएंगे जहाँ से हम अपने कंट्रोल पैनल पे. सो यहाँ पे हम अपने कंट्रोल पैनल पे आ गए. वहां से हमने टास्क बार एंड नेविगेशन पे क्लिक किया, हम बैकग्राउंड पे गए. आफ्टर गोइंग ऑन बैकग्राउंड, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, हियर आर सम ऑफ द पिक्चर जो
पहले नाउ यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं दीज आर दोज पिक्चर्स जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज में होती हैं। अब हमें तो अपनी वो वाली पिक्चर लगानी है ना जो कि हमने डाउनलोड किए हैं। तो हम कहाँ पे जाएंगे, देखो चूज योर पिक्चर के नीचे एक ऑप्शन है ब्राउज, तो वी विल गो ऑन ब्राउज। हम ब्राउज में गए, ब्राउज में क्लिक किया, ब्राउज में जाके हमने क्लिक किया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉलपेपर जो हमने डाउनलोड किया था। अब यहाँ से वी विल चूज पिक्चर, वी विल डू द चूज पिक्चर। हमने क्या किया, पिक्चर को चूज कर लिया। देखो अभी it will take some time and now when we will minimize, देखो कौन सी इमेज आ गई हमारी स्क्रीन पे, लॉट्स ऑफ, देखो हमारी वो बीच वाली इमेज हमारी आ गई है ना, जो इमेज हमने डाउनलोड की थी वही इमेज हमारी स्क्रीन पे आ गई है, राइट। नाउ let us see what is the next thing that we have to read. So this is how we can change the image. अभी हमने क्या सीखा कि how we can download any image from the internet and that too we can do. How we can download our anything from the internet and we can put it as our desktop background. Okay. Now next thing is which is the next thing, update your knowledge. Now we have done this also, picture position, fill, fit, stretch, title, center, we have already done this, so we will not revise it today. Now setting the screensaver, yes this was something that we were about to do yesterday, है ना, ये हमने नहीं किया था, ये एक नई चीज है जो हमें आज करनी है। तो हमें क्या करना है, स्क्रीन सेवर मैम ने आपको क्या समझाया था, द स्क्रीन सेवर इज द मूविंग पिक्चर दैट अपीयर्स ऑटोमेटिकली ऑन योर कंप्यूटर इफ यू डू नॉट यूज योर कंप्यूटर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। See, if you do not use your computer for a period of time, what will happen? If you do not use your computer for a period of time, now, so what will happen? Now, a screensaver will appear on your screen. A screensaver will appear on your screen. Okay. Now, kids, how we can how we can personalize a screensaver also. हम screensaver को भी कैसे personalize कर सकते हैं, that we are going to study now. Okay. वही हम क्या करने जा रहे हैं, now that we are going to study. First is open the personalization window, click on screensaver, the screensaver setting dialog box appears, click on the down arrow of the screensaver, click on the screensaver you want to use. अच्छा चलो पहले मैम करके दिखाते हैं फिर I will read the steps. तो we will do the quick font, we will go on search. Here I will type screensaver. Open. देखो अब देखो मैम आपको क्या दिखाने वाले, देखो ये एकदम ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन है ना बेटा, देखिए दिस स्क्रीन इज ऑलमोस्ट सेम। जो इमेज आप अपनी बुक में देख रहे हो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन है। कहाँ गई मेरी स्क्रीन, धर रही, आ जाओ, है ना। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज अ स्क्रीन सेवर। सपोज आई चूज बबल, तो वो मुझे कैसा दिखेगा, देखो ऐसा बबल सा उठने लगेगा स्क्रीन पे। और फोटोज ये आ जाएगा। नेक्स्ट आई कैन डू रिबन्स, देखो जो आपके स्क्रीन पे है वही चीज, तो आई विल कीप इट बबल, ठीक है, आई विल टेक बबल्स, ठीक है।
bubbles हुआ. Now next is there, here they are asking कि how many minute I want it to play on my screen. I can increase the minute. ठीक है, यहाँ पे मैं मिनट्स को क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ. तो चलो 1 मिनट करके देखते हैं, अब प्रीव्यू करके देखते हैं हाउ माई स्क्रीन विल अपीयर. देखो फिर से प्रीव्यू करते हैं. सी, दिस इज हाउ माई स्क्रीन विल अपीयर. ऐसी मेरी स्क्रीन अपीयर होगी. हाउ ब्यूटीफुल ना, लुकिंग नाइस ना. तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्क्रीन सेवर. ये क्या होते हैं, दीज ऑल आर द स्क्रीन सेवर. गॉट इट? ओके. सो आई विल अप्लाई इट. अब मैं क्या करूंगी, इसको अप्लाई कर दूंगी. After applying, what will happen? I will press OK. And now if I will see, अगर अब मैं अपनी स्क्रीन पे कोई काम ना करूं, अब मैं 1 मिनट तक I will wait for 1 minute. ठीक है, I will wait for 1 minute. I won't do anything. Then see हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, हमारी स्क्रीन पे भी स्क्रीन सेवर्स आ जाएंगे. So still I am waiting for the 1 minute to see my screen. Oh, why? So let us not wait more. Let us move ahead. अब जब स्क्रीन से हम we can't wait for the 1 minute, no. It is very hard to wait. So let us read these statements. Now open the personalization window. Click on the screensaver. We have done this. Now screensaver setting dialog box appear. Click on the down arrow. Down arrow तो हमने यहाँ पे down arrow पे click भी किया. आफ्टर क्लिकिंग दिस डाउन एरो हमें यहाँ पे कई सारी चीजें मिली, उनमें से हमने बबल्स चूज किया. क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर यू वांट टू यूज. सो व्हाट नेक्स्ट, वी हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर दैट वी वांट टू यूज. नेक्स्ट, after this move the mouse pointer to press a key to stop the preview. Click on the wait up and down arrow up button to specify the number of minute. अब यहाँ पे भी हमने किया था ना कि कितने नंबर्स ऑफ मिनट में हमें चाहिए स्क्रीन सेवर, एंड देन क्लिक ऑन ओके. द स्क्रीन सेवर appears after your computer is idle for the number of minutes you specified in step 5. Now next is changing the color scheme. Now here we can change the color scheme. You can personalize the windows. You can personalize the window by choosing different color scheme. देखो हम अपने घर के लिए कलर चूज करते हैं ना, तो likewise we can choose the color scheme for the windows also.
Kids, we were reading about color scheme. So how we can change the color scheme of the Windows 7. Okay, so let me erase this beautiful diagram here. Now kids, okay, now so we'll go on. The step is very much similar. We have to go on personalize window, click on the Windows color, the window color appearance window will appear. Now click on the color you want to use. ठीक है, करके देखें, चलो करके देखते हैं, then I will read the steps for you. So I'll go on control panel. Control panel पे I'll go on navigation. देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कलर्स. सो वी हैव टू क्लिक द कलर्स. ठीक है, कलर हमने चूज कर लिया. नाउ लेट अस चूज अवर कलर. सो लेट अस चूज डार्क कलर. Okay, see, this is how my screen is appearing now. है ना, डार्क कलर. हमने कौन सा कलर चूज किया? डार्क. Now from here I can choose, say I am choosing pink color, this pink color. Okay, now see what happened. See, everything written here get converted in pink. देखो मेरी स्क्रीन कैसी दिख रही है ना? You can see na how my screen is appearing. So what happened? Pink become very prominent. Pink become very prominent here. Now let us read the steps. Now open the personalization window. Click on the Windows color. Click on the window color. The window color appearance window appears. Click on the color you want to use. What you have to do? You have to click on the Windows color that you want to use. Okay, now next step is Windows immediately change the color of the Windows border. Windows border देखो मैंने डार्क किया तो देखो मेरा Windows border सारे डार्क कलर, मतलब डार्क मीन्स ब्लैक हो गए ना. Windows border क्या हो गए? सब सारे मेरे they became डार्क हो गए ना वो. Now next is to set the color intensity. Click and drag the color intensity slider. Next is clicking the color intensity slider. And then click on save changes. Next is what? Save changes. Windows applies the new color scheme. What happened? Windows applies the new color screen. New color scheme. Now, if your computer has a lower end graphic card or the lower graphics memory, Windows 7 is unable to use the effect. Windows 7 will not be able to इफेक्ट. देखो Windows 7 में अगर हमारे लैपटॉप में क्या है, अगर हमारे लैपटॉप में लोअर Windows 7 है, अगर हमारे लैपटॉप में क्या है भाई, लोअर ग्राफिक कार्ड है, तो क्या होगा? तो हम क्या होगा, हम विंडोज पे क्या नहीं हो पाएंगे, हम वहां पे कलर की ट्रांसपेरेंसी उतने अच्छे से हम नहीं रख पाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज in that case you will see that window color and appear dialog box instead of windows. ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमें विंडोज कलर का अपीयरेंस बॉक्स, देखो वहां पे क्या होगा, विंडोज कलर एंड अपीयरेंस डायलॉग बॉक्स आएगा. तो हाउ टू डील विद दिस, दैट वी आर गोइंग टू रीड अहेड.
पर्सनलाइजेशन विंडो, क्लिक ऑन विंडोज कलर। अब यहाँ पे दिया है कि कैसे हाउ वी कैन चेंज द कलर व्हेन वी हैव लोअर ग्राफिक कार्ड। Now click on the down arrow item list. So देखो, I am having Windows 10, I am having a higher graphic card, so I don't need to, I can't show you all these things. Now click on the down arrow item list. Click on the interface object you want to customize. Click in each color list and select a color or color from the item. If the items include text, click on the down arrow of font, size and color to format the text. You can also use bold and italics control to format the text. Repeat step 1 to 3 to customize other item. What you can do, you can repeat to customize the other item. Okay, now then click on OK. Now next is applying theme. So let me show you where scheme is, where this theme is. See, यहाँ पे आपने let me change the color first. I'm not liking this dark color, so I'll keep it light, or I can keep it custom. Okay, now see यहाँ पे, here you can see themes. So if I'll choose themes, these are the different themes. यहाँ पे क्या आया हमारे पास, themes आया, जिसको हम क्या कर सकते हैं, change कर सकते हैं, है ना, we can change the themes. Let us go on theme and let us keep our theme this. Okay. Wow, how beautiful it is looking. See, instead of setting the desktop background, so if we don't want to set the desktop background, screensaver and color scheme, instead of setting the desktop background, screensaver and color scheme individually, you can change all of these at once by applying a theme. अगर हम एक theme apply कर दें तो ये सारी चीजें हम at once हम क्या कर सकते हैं, we can change all of these at once by applying a theme. Each theme also includes its own set of desktop icon, sound effect, mouse pointer. तो देखो अभी हम अब जब थीम चेंज करेंगे ना, तो मैम विल शो यू कि these things, that desktop icon, sound effect, mouse pointer, these all will appear here. यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा desktop icon, mouse pointer and all those things. Okay, now moving ahead, what are the steps? Open the personalization window. Scroll down to view the available themes. Now, arrow themes use transparency, effect, color, intensity, high resolution, background images. Arrow themes, they use high resolution background images. Next is basic and high contrast themes. Next is basic and high contrast themes. So the basic themes use simple effect or high contrast effect. Basic and high contrast image, they use themes use simple effect or high contrast effect. Now click on the themes you want to use. So choose whatever the themes you want to use. Windows 7 apply the themes. You can see the immediate effect on the desktop and then you can close. Then you can click on the close button. Okay, so kids, this is it for today. We have done this thing, screen saving and customization of themes today. Now we will move ahead with our chapters tomorrow.